नहीं है. It's an act of bravery. There is courage needed to speak, especially those first few words. But then the sweetness that lingers can create magic. So let's begin a new conversation about psychology and its problems. A conversation often left in the margins and overlooked. Joining us in our dialogue are three of our very esteemed guests. Welcoming Dr. Upasana Singh ma'am, an associate professor in OB at PK University. She brings 13 years of expertise in teaching, research, and training. She's passionate about empowering through education. She has presented at conferences by IIT, XLRI, IIM, and published in esteemed journals with her research focusing on trust, workplace behaviors, employment relationship, and sustainability. Welcoming Dr. Parul Mittal, Director of Campus Nursing School at the University of Rajasthan. She's a distinguished academician with accolades including first rank in BSc Home Science at Delhi University and receiving the prestigious Srimati Pramila Bai Rao Memorial Prize. Her rich educational background and research focus on age-related differences in lifestyle and dietary patterns, demonstrating a commitment to both education and nutrition. Welcoming Ritu Ma'am, Director of Vidyashram Public School, Jaipur, a visionary educational leader known for transforming educational landscapes. With a PhD in preschool pedagogy and a proven track record in enhancing preschools, Ritu Ma'am integrates creative drama, advocates for inclusive education, and spearheads cultural initiatives, bringing a wealth of knowledge to our event. Welcome, and I'm honored to have you all on my panel today. Without further ado, let's continue the dialogue. Starting with you, Ritu ma'am. As the saying goes, just as strong roots support the blossoming of vibrant flowers, acknowledging and nurturing the roots of a child's well-being through early education lays the foundation for a blossoming future. Where lies the root cause of the psychological issues and what are the possible solutions with special focus on early education in creating a resilient future of a young child? Your opinion, ma'am. Namaskar. Thank you for inviting me here and to give my views on that. Let's begin with psychological problems in children. We want to know what are the psychological problems that I am observing now because children don't have psychological problems. बच्चे बच्चे होते हैं खेलते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स तो हमको दिखने लगती है so why don't they have psychological problems because they are one with nature जैसे हैं they are one with you are one with nature uh, then there is no problem at all but we are changing the nature बाहर अलग हो रहा है अंदर अलग चल रहा है इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं so the problems that I have lately in the sense at least that have started creeping in and especially number one would be stress anxiety which is just going at a rampant speed it's just harming the child just harming children at large so stress anxiety have also come, bullying has increased a lot. So bullying is one of the psychological problems again that we're observing. Then loneliness, depression, even in young children it has come up. And then there's another that I've been finding it is that they've created their own world of their own after seeing too much of probably the social media as you say बहुत ज़्यादा वो देखो तो अपनी दुनिया बन गई है तो social interaction problems हैं so social emotional problems सारी psychological problems जो हैं उससे related now we know that these are the problems there are many more the name is that which we are observing in everyday life which I'm seeing and children around so हमको पता करना है where is the cause कारण क्या है वहां पे देखें और इसका उपचार क्या है कारण क्या है और उपचार क्या है कारण जो देख रहे हैं और जो भी उसका इलाज कर रहे हैं वो एक जैसे बोलेंगे एलोपैथी का इलाज होता है जो विच इज एट अ वेरी सुपरफिशियल से वो कर देते हैं वी डोंट नीड दैट वेयर आर वी लुकिंग फॉर द कॉजेस द कॉज वुड बी
self, ma'am deals. So knowing yourself, your mind, your emotions, your feelings, उनको जानना, वो कनेक्ट करके आपके पेरेंट्स, घर जहाँ रहते हैं, घर का एनवायरनमेंट जो है, स्कूल का एनवायरनमेंट जो है, वहाँ पे एट लार्ज कल्चर, जो सोसाइटी है, जो समाज है, समाज से ही जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी बच्चे के इमोशंस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं, वो वहाँ से सीखते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत है। तो इसका इलाज क्या है? शुरू कहाँ से करें? तो जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करो। मेन थिंग इज़ दैट मेक द बेस स्ट्रॉन्ग। बेस स्ट्रॉन्ग एजुकेशन ऑफ कोर्स आई एम नॉट डीलिंग विद पेरेंटिंग राइट नाउ होम वाला है प्रॉब्ली पारुल इज़ गोइंग टू टेक दैट अप। सो उसको थोड़ा-सा रखती हूँ साइड में बट एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो स्कूल में बच्चा आया है तो उसको पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? दैट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ बाय स्ट्रॉन्ग आई मीन 12 साल, 14 साल, 16 साल जो भी है 12 साल, 14 साल जितने भी टाइम वो स्कूल में रहते हैं एंड देन द नंबर ऑफ बुक्स दैट दे क्रैम एंड एवरीथिंग इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है but what are we ignoring is the what after all that learning that they've done, still they're not equipped enough for the life, how to lead a life. उसकी तैयारी हमने नहीं कराई है। तो जब बच्चा इतना सारा पढ़ के निकल रहा है तो उसकी तैयारी है नहीं। Moreover, the school systems and we're focusing on a lot of ideas, abstract ideas. So हम बहुत ज़्यादा we are overlooking the emotional aspect of the child initially also. Information बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, but the emotional aspect is being somehow somewhere it is being overlooked. And if you overlook emotions and feelings, and in fact they need to be given a constructive line of act. कैसे इमोशंस को ट्रीट करना है, एक लाइन होनी चाहिए, कौन सी लाइन पे चलाना है। But if you try to, if you don't give it proper attention and proper direction, it will have its outburst somewhere or the other. कहीं न कहीं emotions का outburst होगा, maybe it is in a destructive manner. So what children have to be told at an early age that being calm, being peaceful, that is the nature of maturity. वो and in that उस अवस्था में जो भी पर्सपेक्टिव है जो हम देखते हैं, एनीथिंग दैट वी सीइंग वुड बी द राइट पर्सपेक्टिव दैट वी सी। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को ये बताना कि नॉ कैसी अवस्था में वो सही वो ले सकें। कोई भी जैसे हम डिसीज़न्स लेना है, क्या डिसीज़न जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम में यू हैव अ चॉइस, यू ऑलवेज़ हैव अ चॉइस। कर्म करते रहना है भगवद गीता का वही कर्मयोग पूरा ही उसके बारे में। तो आप हर वक़्त कर्म करे जा रहे हैं, यू ऑलवेज़ हैव अ चॉइस ये करना है, वो करना है। हम बच्चों को कभी भी और अधिकतर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये पता ही नहीं कि हमें चूज़ क्या करना है, क्या चूज़ करेंगे? आप लोग यहाँ बैठे हैं ज़्यादा तो नहीं है एक ही 2 ही बट हाँ, हाउ डू यू चूज़? तो वो कभी हमें बताया नहीं गया है कि व्हिच इज़ गुड फॉर यू फॉर अ लॉन्गर रन। जो एक आगे की दृष्टि से देखा जाए कि हमें लंबे समय के लिए हमारे लिए अच्छा है, तो हम बच्चों को ऐसे ही बताते हैं कि हाँ, इनिशियली आपको उस समय खाना अच्छा लग रहा है, बट आपको व्हेन यू लुक आप आगे के लिए आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। सो दैट वुड डिपेंड ऑन दैट। माइंड इज़ ऑलवेज़ इन दैट प्रोसेस ऑफ सेइंग कि जो आसान है काम वो कर लो। तो उसको उस तरीके से देखना और तीसरी बात रहती है कि हम जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, उससे हम इवॉल्व करते हैं एंड दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड फॉर द सोसाइटी। तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिए हुए हैं, उन सबको हमने बताया ही नहीं है कुछ भी। हम क्यों हमारे स्क्रिप्चर्स या बिलीफ सिस्टम जो एक बच्चों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो बिलीफ सिस्टम नहीं है। आजकल पेरेंट्स कहते हैं नहीं हम अपनी वैल्यूज़ या वो नहीं उनके ऊपर डालना चाहते, लेट देम डिसाइड ऑन देयर ओन। उनकी जो मर्ज़ी आए वो समझते हैं, उनको उसके लिए करने दो। तो आई डोंट वांट टू इम्पोज़ बिलीफ सिस्टम ऑन देम। तो क्या बच्चों को ये जानकारी तो है नहीं, दे नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस देयर और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं, ये कुरान, भगवद गीता, श्रीमद् तो ये सारी चीज़ों में दिया हुआ है। बट न वेस्टर्न थ्योरिस्ट जो है जैसे वाइगॉत्स्की की थ्योरी पे हम सोशो कल्चरल हैं, उन्होंने बोला है कि हाँ, बच्चे सीखते ही कल्चर की तो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर होना चाहिए, बिलीफ
सिस्टम होना चाहिए जो हम बच्चों को दे सकें, ताकि उनकी रूट्स मजबूत हों और उसको पकड़ के वो आगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख सकें और काम कर सकें। बट वी आर नॉट गिविंग देम दैट एनीमोर और बच्चे सीखते कब से हैं क्योंकि आपस में बातचीत के दौरान पूरी चीज़ ही अधिकतर पुराने जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनमें आपस में बातचीत से ही सीखा गया है और ज्ञान दिया गया है। तो अब वैसी बातचीत की तो वो है ही नहीं, यहाँ तो घरों में बात करने की वो नहीं है, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। तो इस तरीके से बच्चों के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, उससे भी वो वंचित हो रहे हैं। वो हमें प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक पता नहीं एक और बात ये चीज़ रह जाती है कि हमने जो साइंस है, जो जितनी भी साइंस की प्रगति हुई है, वो नेचर से उन्होंने सीख लिया है और जो हमारा ये जो ज्ञान है जिसे हम कहते हैं द गोल्ड माइन जिसे बोलेंगे बिकॉज़ द मोर यू डिग द मोर यू गेट माय स्क्रिप्चर्स आर लाइक दैट तो हम उधर से जितना सीखना चाहते हैं वो उसको बहुत साइडलाइन कर दिया गया है क्योंकि साइंस तो बहुत रीसेंट है ना, इतनी पुरानी नहीं है जितने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको क्यों साइडलाइन कर दिया क्योंकि उनको उनको लगता है इसमें कुछ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक वो तो बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसको पढ़ाया नहीं जाता है, उसको ज्ञान दिया नहीं जाता है। Which I feel again we can look into it and try to help children in giving them that. Uh, और इसी के बाद lots to be given. बच्चों को जो strong roots दे दी जाएंगी that will help them which will help them to decide on things, which will help them to understand that whatever they're doing, they have that ultimate potential in them. उनके अंदर सब कुछ है जिससे वो सब कर सकते हैं. That potential they're born with. Somehow वो जानकारी उनको मिलनी चाहिए. And again, that surrender and the attitude that they have to work with that kind of zeal in them. So that has to be there. They whatever they're doing, they have to do it with full honesty and surrender, and they have to do it with their full यस, वो करेंगे तो अपने आप बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी और एक डर, द्वेष मात्र भी कभी बच्चों में नहीं आना चाहिए। वो डर नहीं होगा और वो ये अपने ऊपर भरोसा करेंगे दैट आई हैव दैट पोटेंशियल टू डू इट तो फिर कहीं पे भी बच्चों में कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने नहीं बट देन पेरेंट्स नीड टू बी द सपोर्ट सिस्टम देयर दे शुड हैव देयर बिलीफ सिस्टम क्लियर एंड बिलीव इन द कल्चर वी नीड अ टोटल चेंज हियर इन द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ एजुकेशन क्योंकि आज का ज़माना ज़्यादा बाहर की तरफ आ गया है। बाहर जो दिख रहा है उस पे विश्वास करना और वी हैव टू गो विदिन बिकॉज़ टू नो योरसेल्फ इज़ द ट्रू नॉलेज टू अ दैट इज़ व्हाट उसको ये तो सभी महान लोग बड़े लोगों ने यही कहा है अपने आप को जानना। सो टू नो योरसेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और हम तो सारा चीज़ बाहर का वी चिल्ड्रन आर जस्ट वेट they disturb because they just have to now stop thinking that whatever their success depends on what others' expectations are. वो others' expectations को छोड़ देना that fear of others' expectations and believe in their own potential, then nothing can stop them when there is no fear and there are no psychological problems that will exist. But we need to change the education system totally of outside to inside. We have to change that. Thank you. थैंक यू मैम। मैम की एक एनालॉजी जो स्टैंड आउट करती है, आई थिंक मैम ने ये बोला बहुत इम्पोर्टेंटली, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है बट इमोशनल अंडरलोड है विद आवर चिल्ड्रन एंड इट्स वेरी ट्रू। एंड मेनली जो मैं पिक करूंगी मैम के मोनोलॉग से वो ये है, मैम हैव गिवन द इम्पोर्टेंस एंड शी इज एक्नॉलेज्ड कि देयर आर रूट्स बट शी हैज आल्सो गिवन बच्चों को wings with the solutions, very beautiful solutions उन्होंने प्रोवाइड करे, राइट? So my next question is to Parul ma'am, connecting with how ma'am roots or causes क्या क्या है psychological issues के बच्चों के साथ. So how can primary education acting as a golden guiding light minimize these psychological problems in children at a later stage? So Parul ma'am, you are doing that. Thank you, Alpna, for your question. And hello, everyone. I would like to thank organizing me for this session. So, as far as your question is concerned,
Like I'll be talking about early age of children, like pre-primary, which is 3 to 6 years of age. And this is the age which has very peculiar characteristics. Like the physical growth is not very rapid, but mental growth is very, very high. As we say that 80 to 90% of the brain of the child is developed by the age of 5. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैंक स्लेट है, तो उसका भी एक साइंटिफिक बेसिस है अगर हम ये कहते हैं बच्चे को हम अगर उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है so that means he is open to receive lot of information, lot of stimulus can be given to the child at that time. So preschool age is very very important. As Ritu ma'am also highlighted that early intervention is very important. So अगर हम उस जड़ पे ही काम करें तो शायद आगे की एज में जाके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो ही ना। ये एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चा स्कूल पहली बार जाता है, वो अपने घर से पहली बार निकल रहा है एंड ही कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज, ऑफ एंग्जायटी, ऑफ स्ट्रेस। उसको डर होता है माँ-बाप से दूर होने का, नए चेहरों को देखने का जिसको हम स्ट्रेंजर एंग्जायटी बोलते हैं या सेपरेशन एंग्जायटी है उसके साथ। तो इस एज की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें थ्योरेटिकली बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बता चुके हैं। चाहे वो फ्रॉइड हो, चाहे पियाजे हो, स्किनर, बहुत सारे हैं जिन्होंने बिहेवियर थ्योरीज़ दी, पर्सनैलिटी थ्योरीज़ दी और हमें उन चीज़ों से ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप पे बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज इज़ पुटिंग थियरी इंटू प्रैक्टिस। हमें पता है कि ये है और ऐसा होना चाहिए। But to draw a fine line between what is a so-called normal behavior or normal curve of development and why the child is behaving in certain way. So the role of primary caregiver, whether it is a teacher or a parent, becomes very, very imperative. You know, the labeling of the child, the tagging of the child is very, very injurious. अगर आपके पास बच्चा आ रहा है जिसका ब्रेन डेवलप हो रहा है एंड ही इज ओपन टू इंफॉर्मेशन so we have to be very, very sensitive in looking at the needs of the child. बच्चा हर फेज में एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है और अगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने में उस बच्चे की हेल्प करते हैं, तो बच्चा नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। अगर वो स्टेज पे जाना कहीं किसी वजह से रुकता है, तो इसका मतलब फिक्सेशन हो गया उस जगह पे, फिर वही कॉज बन जाता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का। तो हमारे पास जब बच्चा 3 से 6 साल का है तो हमारा ये एक्सपीरियंस भी है कि अगर हम एक लेबल करते हैं ये बच्चा तो जैसे कॉमन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो मोस्ट कॉमन हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, जैसा कि मैम ने भी बताया। उसमें अगर हम कॉमनली प्रेवलेंट डिसऑर्डर्स देखते हैं तो हाइपर एक्टिविटी है, ऑटिज़्म है जिसमें बच्चा चूज़ेस टू बी चूज़ेस टू रिमेन साइलेंट और अपने अपने आप से ही सेल्फ इंड्यूस्ड बिहेवियर शो करता है। या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जायटी डिसऑर्डर्स, द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। बट इन सब चीज़ों से हमें सेंसिटिव अगर हम हो जाएँ कि क्या बच्चे की रिक्वायरमेंट्स और क्या नॉर्मल कर्व ऑफ डेवलपमेंट है। तो अगर जो भी डेविएशंस है तो हमें इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स, इंडिविजुअल अटेंशन कैन बी गिवन टू द चाइल्ड और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बच्चे को एक उसका ट्रस्ट गेन करके उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर कोई किसी वजह से कोई इफ एट ऑल देयर इज़ अ प्रॉब्लम सो दैट कैन बी डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज और उसकी इंटरवेंशन उसी टाइम पे की जा सकती है। So this is the main crux of importance of pre-primary level in development of psychological problems. And in addition to teachers, the role of parents also becomes very imperative. We have different styles of parenting. मतलब मैं theory की बात नहीं करती, मैं practice पे ही बोलती हूँ ज़्यादा। अगर कोई पेरेंट है जो हाई डिमांड पेरेंट्स हैं, बट दे हैव लो वार्म या फिर कोई पेरेंट्स है जो बिल्कुल ही परमिसिव पेरेंट्स हैं या फिर बहुत बच्चे से कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो और कुछ बिहेवियर होता है जो हमें यंग एज पे वो दे अपीयर टू बी नॉर्मल। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा कोई इनएडिबल चीज़ खा रहा है, कुछ भी चीज़ उठा के उसने मुँह में रख दी, तो इट मे लुक नॉर्मल फॉर एन इन्फेंट और 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड और 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, बट वही चीज़ अगर 10 से 12 साल का बच्चा कर रहा है, तो हम उसको किसी डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये फाइन लाइन ड्रॉ करना इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल फॉर द टीचर।
अगर यहाँ पे ये चीज़ें हम पार कर गए तो फिर हम शायद वो हर प्रॉब्लम के 2 कॉज़ होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी हम शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एनवायरनमेंट कुछ हद तक to a certain extent we can exert control over environment. So this is the thing that where comes in the role of parents and teachers as positive reinforcers. अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि ये तो यही करता है, ये तो है ही ऐसा, ये तो करते ही ऐसा है, वो चीज़ बहुत आसान है। हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत आसान है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत आसान है। बट बच्चा knowingly unknowingly उन चीज़ों को ग्रास्प करता है, which affect the development of self-esteem and self-confidence, which is the root cause of these problems. So I feel if we are sensitive enough in looking to the needs of the child and to help the child overcome the conflicts which he or she faces at each point of time. So that will certainly help in better adjustment, creating better individuals, and decreasing the prevalence of the psychological disorders. थैंक यू मैम। मैम ने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बहुत अच्छे से हाइलाइट किया इस मुद्दे को कि प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इट नीड्स टू गेट सेंसिटिव टुवर्ड्स द चाइल्ड्स रिक्वायरमेंट। हमें जो एजुकेशन है वो चाइल्ड के अराउंड सेंटर करने की जरूरत है सो दैट इट बिकम्स बेसिकली अ बीकन ऑफ होप आगे के फ्यूचर के लिए। थैंक यू मैम। So moving to Upasana ma'am, as a distinguished academician and an associate professor to university students, what are the most common issues that can lead to psychological problems among college students, the age group that is grappling with newfound independence, academic pressure, and other significant challenges? Thank you, Alna, and my heartfelt thanks to the organizers for inviting me here. And it's really a privilege to share a thought. In fact, it's more about my experience, a short experience interacting with the youngsters. When we talk about uh, going youngsters or young adults, I think the complete India or the nation is looking towards this direction because we talk about tag them as demographic dividend, and the whole economy is ride on shoulders of this dividend, which is a powerhouse of talent. But to a great extent, this power may not be a power. They are not healthy minds, the healthy hearts, and the healthy body. So I believe the bigger challenge now with this demographic dividend is how do we create healthy and functional mind. And I believe end of the day, it's a mind game. So whatever psychological problem we are talking about, it is all about what exists in your mind. And the challenge, the bigger challenge is that it's not visible, right? So identifying those problems are really difficult. So अगर आप में कोई physical ailment है या तकलीफ है, वो दिखता है और डॉक्टर उसको diagnose करना उनके लिए आसान होता है, but psychological problem का diagnosis is not easy. But I believe it's all about understanding more closely that what this generation is all about. So when I say talk about this generation, of course, the generation is full of energy, full of enthusiasm, full of big dreams to achieve. But then the concern, so as a teacher, when I move into class and I have an audience of 90, 80 in a class, a great motivation for teacher when you have this right audience sitting there and you're talking about something. But end of the day, you find that this generation is lost. At certain point of time, it also give you the feeling that they are there, but they are not. And where are they? Where are they? Where are they lost? So when you really get into this, the saddest part of the story is, everybody know that they are doing something. Why they are doing that is something which is not very clear. So first psychological problem, so it is not tested, but I believe if it is tested, it will lead to the syndrome of attention deficiency. I believe most of us would be in this band of attention deficiency disorder. Now, what is the
arm of this psychological problem, which Matt talked about: stress, anxiety, low self-esteem, and number of things. And I believe all of them are connected. So, what leads to this problem? Actually, I believe the problem human is the creator and the destructor of self. So ideally, this problem comes from maybe the family and individual itself, and I don't find anything beyond the long stretch screen times. And if you talk about the college going student, here the generation is having freedom of having their personal space, which maybe the school students or pre-primary are more safer hands because that's controlled by parents. But here the screen is in complete control of this generation. What they are consuming over the screen, how much content they are consuming, and uh, how long they are consuming. I think that is completely uncontrollable, and that leads to the more genesis of the problem. So I believe this is the generation which is having overload of information. They are completely hooked. So we say that humans are hooked and machines are learning. So the bigger questions that are human learning. आपकी क्लास में 60 70 80 बच्चे हैं, पर क्या वो सीख रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है. Just because they are hooked somewhere, though they have a lot of information, but what are they churning that in? So it is something like, I have a computer, I'm pushing in a lot of data, but data is not getting processed. वो प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा? मेरा सबसे बड़ा पेन ये है कि आई एम गिविंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन, सर्टेन इनपुट्स, right environment, but why is it getting processed? So I believe that is where screen time. So when you're into screen, I think the overload of information is something which is leading to completely getting uh, making no sense of what you're getting. Second is, I believe this generation is all about hits, likes, follows. So I believe this is what have completely disconnected them to the reality. They believe reality is something which is there in the virtual platform. I think that leads to instant gratification. Instant gratification. अगर मैंने कोई पिक्चर पोस्ट की है, कोई कमेंट पोस्ट किया है, मुझे इमीडिएटली 10 हिट मिलते हैं, विद इन एन आवर आई गेट 100, maybe by end of the day 1000, and I feel like a winner. So the difficulty I find with this generation is instant gratification and non-acceptance to failure. So if you have not done good and a teacher give you a feedback that it's not something right and you need to correct, unacceptable. It can't be because I get a lot of result which is, so I believe this is leading to a psychological malfunction in the students. Next is, I believe ma'am mentioned about it, that when you're too much into it, I think you are getting socially disconnected. So when you're getting socially disconnected, definitely it is leading you to loneliness. When you're lonely, definitely next possible problem that will come up is overthinking. You create certain thoughts to be true. सच नहीं है लेकिन ना सोचा है उसके ऊपर झूठ भी अब सच दिखने लगी है. So I have couple of students who do not come to class just because they overthink that the peers in the class do not like them, or they are made fun of, or possibly they did something which was not successful, and people would make further fun of it. So there are youngsters who have stopped coming to class just because they don't get that immediate acceptance in the class, which is much easier on social platforms. So I think that is a bigger problem. I think this generation is, since I say that they are hooked up on the screen, they're not idle. So they are hooked up for nothing. But they're not idle. And I believe any processing needs space, needs a time where you are not doing anything.
And I believe whenever I ask a question to any student who is taking admission to my program, BBA program, I say, why are you choosing this program? To my shock, I believe 80% of the candidates applying say that maybe my friend is applying, my father has told me, I don't know, my brother has suggested me, so they don't have the decision of their own. And I believe, don't you think, are we going to a grimmer future that this generation is not left with time to think any question or concept not influence? The question goes, uh, why? Or maybe I get an answer, right answer, and I put a question. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पर क्यों आपको ऐसा लगता है? तो इस क्यों का जवाब नहीं है, क्योंकि सोच नहीं है, क्योंकि सोचने का वक्त नहीं है. आपको सोचना फजूल लगता है क्योंकि जवाब गूगल के पास. I think that is where we have either malfunction or leading to a psychological problem. And when you lose, I think there is a problem that you don't want to accept that I lost. It can't be. ये हो ही नहीं सकता. Because I think gaming provides that feeling that you will win in any which ways. So losing is not something that is part of life. You need to keep on winning. There is level one, level two, level three, and you keep on going, making money over that. So I believe the generation is not accepting the reality since I do not know, we have created something that makes life easier, but it's making life difficult into a different way which we cannot imagine. And in days to come, I believe it will have a very painful time for all of us. So we as in higher education, I believe we need not do anything. Can we introduce a, a class where and they have to be there and think and ponder what or what not, or just sit right there, observe certain things around. The poor thing is that you give lot of information and you still keep having questions on something which has been already provided. Painful part is the student has been given the question paper and the question has been misread not by one but the percentage is in a bigger number. That is a concern because is it generation too much into digital world that they do not they're losing the art of reading and writing and analyzing. I think this is a bigger points of pain because everything is back to you because you get it at the click of, of your mouse. Patience is something that you find the generation losing. I believe anything which is would require patience. Hard work is something big question because you get everything ready made. You don't want to work hard. And I believe all the psychological problems. So if you don't make good, do not get acceptance, you do not get that kind of an social identity, you are getting into stress, you're getting into anxiety, you have sleepless night, overthinking, overeating, and I believe that is a complete lifestyle malfunction which is coming up in a big way. So I believe it's just about making the generation think, giving them space, and it's more about, I think the ma'am very rightly said that knowing yourself is a very difficult and a very long journey. It's not, a journey will be, achieved in a day or a month or a year, but it would require at least some free spaces for yourself where you're just sitting and thinking of anything which comes to your mind because वो आई थिंक अगर हम अपने बचपन की बात सोचें तो हमारे पास स्क्रीन नहीं था एंड आई यूज्ड टू थिंक ऑफ स्टार्स आई यूज्ड टू थिंक ऑफ व्हाट will be something beyond the sky, what is there, how many stars, can you go ahead and count stars? So there were some very abstract questions which never had an answer, but it really made me excited about knowing something which was around me. And today, when I say that we travel somewhere without screen, I think students say that "Ma'am, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, हमें phone." And I believe the bigger anxiety is that you wake up in the morning and you don't find your phone.
and you just take away the phone from the student and the kind. I mean, you're taking away the life. Madam, कुछ भी कर लो ये phone से देखो. You give me any penalty, the penalty of it, attendance, you give me the penalty of marks, but do not take away my life from it, because this is something we cannot, think, live without. So I think this is a bigger malfunction with this generation, because they have freedom, but that freedom has, you know, you know, has made them. It's an uncontrolled screen time, which is making them lonely, which is making them slipping into depression, anxiety. So much of information that they don't even remember where they have seen that. आज का डेट क्या है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझे एग्जामिनेशन हॉल में आता है. So there, and it really makes it so painful that as a student, I never forgot what the date was. And we were the ones that used to confirm कि आज का date क्या है बता दो. When you ask the students in the examination hall, ask teachers what is the date, so let us figure it out. So this is the generation which is having everything in abundance, but sad part is able to make the best out of it. It's just because they are having uncontrollable, benefits being given to them. Uh, that's all from my end. We all understand what it. Thank you, ma'am. And thank you especially for asking a question to this entire generation. Where are they? कहाँ पर है ये सब? Right? है ना? And ma'am spoke about the importance of heart health and the importance of mind health. और मैम ने कई सारे diagnoses बताए, ADHD and loneliness and so many more. And ये सब सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है कि हाँ हमें कोई इशू है. So I read a question somewhere. What happens when people open their hearts? And जैसे मैम बता रही हैं, rightfully the answer was also something like that. They get better. So first of all, we need to accept. हाँ एक problem है. We are all wired. We are a wired generation. जैसा मैम ने कहा. So on that note, we move forward to our final segment. Now I open the floor to our audience. You can ask your questions, you can present your thoughts, and I give the floor to you. If anybody has a question. Yes, And how did it shape your approach to overcoming difficulties? Parul ma'am, would you like? See, in my 14-year-long career with pre-primary children at Campus School, there are only two words that I would like to share with you. One is trust, and the other is sensitivity. Unless and until we are able to gain trust with the child, we cannot. अगर बच्चा घर से छुट्टी होने से भी बोले कि मुझे स्कूल जाना है, तो हमारा तो हार्ट कंप्लीट हो गया. जो हमारे मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि मुझे ऐसे बच्चे मिले जो बहुत एंथुसियास्टिक रहे, मुझे फीलिंग मिली और मैं बहुत एवरी डे इज़ अ डे ऑफ लर्निंग फॉर अस. हम हर रोज़ नई चीज़ सीखते हैं, तो बच्चों से भी नई चीज़ें. एंड सेकंड थिंग इज़ वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव दैट कि हमें लेबल करना बहुत आसान है. अगर हमसे कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो हम एक्सक्यूज़ दे देते हैं. अगर कोई बच्चा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने सुना कि मोस्ट कॉमन problem is hyperactivity or attention deficit hyperactivity. This is common in children. Just take that example as against behavior tantrums. कोई बच्चा बहुत pampered child है और वो tantrums throw कर रहा है. तो अगर टीचर ये बोल रही है वो hyperactive बच्चा है, तो ये कितना गलत हो जाएगा उस बच्चे के साथ. तो हमें ये सेंसिटिविटी हमेशा रखनी है कि अगर कोई चीज़ हमें कोई बिहेवियर हम देख रहे हैं, तो हम उसको किस तरह जज कर रहे हैं. और ये चीज़ इसलिए और इम्पोर्टेंट होती है कि वर्ड ऑफ द टीचर इज़ वर्ड ऑफ द लॉ फॉर द स्टूडेंट. जो मैम ने बोल दिया या टीचर ने बोल दिया, वो बच्चे के लिए एक ब्रह्म वाक्य हो जाता है.
उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. So that means your role early educator of the child when the brain is developed becomes very, very important. So these are the my two learnings that we have to develop trust and we should be very, very sensitive towards the children. Thank you, ma'am. Good question. Ask my जो फ्लॉट कि हम बहुत सुपरस्टिशंस को मानते हुए आए हैं, तो फिर हमें लगा कि नहीं बच्चों को तो सही लगेगा, वो वैसा करेगा, बट लेकिन बच्चों को ये भी तो इनकलकेट करना है कि आपको सवाल पूछना चाहिए कि अगर मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं क्यों कर रही हूँ? तो क्यों नहीं कर रही हूँ? या बच्चा अपने आप से पूछे कि ये कैसे करना चाहिए? तो ये जो कन्वर्सेशन होती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो हम कैसे कर सकते हैं? और एक और आपने कहा कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। तो मैम एक्चुअली कि ये मेरा पर्सनल क्या होगा कि अगर मैं अपनी क्लास में होंगी तो फिर मुझे लोग बुली करेंगे और अगर फिर वहाँ पे मेरे को बुली नहीं होती, मुझे बुली करना भी नहीं, मैं तो नहीं उधर की नहीं कैसे कोप अप करें और चाइल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर को कैसे हम डील कर सकते हैं, फिर अगर खुद नहीं भी हम उसको कैसे ऑफिस ला सकते हैं। So, ma'am, parenting का question Ritu ma'am answer कर पाएंगे and gratification I think about. Yes. आपका सवाल है कि बिलीफ सिस्टम को कैसे पेरेंट्स कैसे बच्चों से बात करें. जो भी मेरा बिलीफ सिस्टम है, हो सकता है कि मैंने थोड़ा बहुत सुपरस्टिशन प्रैक्टिस किया हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि प्रैक्टिस किया था, ओके, तो मुझे अपने बच्चे को नहीं मिले. तो लेकिन रिस्पॉन्स होता है कि फिर बच्चा पूछता है कि आप ये क्यों करते हो? तो फिर वो एक कन्वर्सेशन कैसे हो पेरेंट और बच्चे. got it. Now the thing is that you have to read. You have to be equipped yourself. हम तो पढ़े नहीं, हम जानने की कोशिश ही नहीं करते. एज अ पेरेंट ये जानते हैं, तो हम पहले ये जाने समझे एंड लाइफ लेसन child has to learn from life itself. So if you have learned it from books, then definitely you are not the right person. If you have really lived, you have experienced those. Because life lessons have to be learned from life. Give them that chance to live. Belief system की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीजें मैं एक श्लोक पढ़ती हूँ आपको अगर पता है इसको. नियतं कुरु कर्म कर्मज्यायो कर्मणः शरीरयात्रा विजते प्रसिद्ध्येत कर्मणः. अब जो क्या है हमने बिकॉज़ गीता और ये कुछ चीज़ें जो घर में पढ़ी जा रही हैं, हमारे को भी मेरे दादाजी ने बताई हैं, मेरे को उसका ज्ञान दिया गया है, मेरे को शायद उस समय समझ में नहीं आई थी। पर उन्होंने मुझे कहा था जब ज़रूरत हो, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने मुझे कहा था जब ज़रूरत हो तो तीसरा अध्याय 8वाँ अध्याय का अध्ययन करना, तो आई नो वेयर टू लुक फॉर इफ आई एम वेयर टू फाइंड द आंसर. नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट themselves are lost. They don't know. पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था. तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये होता था देयर वर पीपल दे वर गेनिंग इन्फॉर्मेशन और विज़डम है. नॉट सेइंग इन्फॉर्मेशन बट दैट विज़डम दे गेन्ड इट एंड लाइफ लेसन्स वो थे. तो जहाँ से उनको सीखने को खुद से मिलता था. अब हम पेरेंट्स ही नहीं समझ पाते और रोज़ जो सुपरस्टिशंस हैं या डर के काम कर रहे हैं. किसी पण ये कह दिया गया है आपको ये अवॉइड करना है तो आप ये कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा. तो डर है. मैं तो आपको पहले ही कह दूँ कि डर तो वहाँ से निकला नहीं है. जब तक डर है तब तक उसके आगे हम कुछ सीख ही नहीं सकते हैं. जब डर डर के काम तो कुछ है ही नहीं. बिना डर के काम कर रहे हैं यहाँ पे इट इज़ दैट इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड डेप्थ. दैट इज़ व्हाट यू नीड. आप किसी भी चीज़ का जैसे कि मैम से भी अभी बात कर रही थी तो कोई भी चीज़ को उस डेप्थ में जाके काम करते हो या सीखते हो, देन यू आर गेनिंग दैट जो हम कहते हैं सागर है जो ज्ञान का. तो एक शब्द में आपको समझ आ गया ना तो हो जाओगे.
बस वो समझना है। अब तो हो ये रहा है कि हम मैंने 10 किताबें पढ़ ली, मैंने ये कर लिया, तो जैसा उन्होंने कहा हमने कि उसको समझने का टाइम नहीं है, उसको उसका सार उतार। जी, बोलिए। जी, पेरेंट्स बिकम्स सो इम्पोर्टेंट लाइक एक पेरेंटिंग तो उनको ये बताना मेडिटेशन देखो मेडिटेशन एंड योग ये तो वापस हमको वहीं आना पड़ेगा क्योंकि क्या हो गया है कि इतनी इन्फॉर्मेशन है कि दिमागी तौर पे माइंड में तो इतनी हलचल है। अब अभी मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ, कोई घर देखना चाह रहे थे कहीं पे। घर कहाँ देखना है जहाँ पे थोड़ा हल्ला-गुल्ला हो, थोड़ा शोर हो भई, चहल-पहल हो, वहाँ पे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में इतना हल्ला है कि उनको वो शांति कबूल ही नहीं हो रही है। क्योंकि हम अंदर से अस्त-व्यस्त हो गए हैं। हमको शांत होना सीखना पड़ेगा ना और बात भी वही है। देख उसके लिए क्या करो ध्यान जो हम कहते हैं, हमको कंसंट्रेशन, मेमोरी से तो हम काम ही नहीं कर रहे थे मेमोरी लॉस हमें ये पता ही नहीं जो रोज की दिनचर्या है वो उसमें काम हमारा हमारा गोल क्या है? हम किसके लिए कर रहे हैं? यदि वो फ़ोकस है एंड बाकी चीज़ें नहीं करो बस उसी पे काम कर रहे हैं, तो मिल ही जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है ना? तो वो चीज़ हम बच्चों को दुनिया जहाँ में ये भी करना है, ये भी करना है। छोटे बच्चे 5 या स्कूल के और 10 क्लासेस में जानी पड़ती समझ के आ रहे क्या करें बस हम स्कूल में लाती हूँ मैं उनको कि यहाँ आराम से रहो, शांति से तुम भी और आराम से रहने दो बस ताकि यही आई होप यू गेट इट। हाँ, बहुत लंबी हो जाएगी बट बिलीफ सिस्टम पेरेंट्स का अपना क्लियर होना चाहिए। आप देखिए नॉर्थ और साउथ में खाना खाने लग जाता है ना, तो वो कल्चर जो ये कल्चर हमारा कल्चर ऐसा हो रहा है दिखावे वाला। तो जब हम बाहर की तरफ होते हैं, हमें अंदर जाना है, जब वो बदलेगा तभी वो होगा काम। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, आपको जानना तो अपने आप को ही है ना, आप क्या चाह रहे हो तो आप ही बताओगे, आपको कोई आके नहीं बताएगा, है ना? वो वही चीज़ पता करनी है, उसके लिए आपको अंदर की तरफ जाना है, ध्यान करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा और वो होता है पोटेंशियल टू जस्ट एनीथिंग ठीक है ना? मैम मैं बस एक चीज़ ऐड करूँगी उसके बाद आई विल ऐड टू द मेडिटेशन पार्ट जो आपने बोला। अ, हर चीज़ हम बच्चे को जितना मैक्सिमम एक्सपोज़र दे सकते हैं, है ना? वी कैन ट्राई आवर लेवल बेस्ट। कुछ चीज़ें बच्चे ऑटोमैटिकली ले लेते हैं, स्पॉन्टेनियसली कुछ हम उन्हें बताना पड़ता है, एटलीस्ट कुछ 5-10% का उन पे असर डाल सकें। तो छोटा बच्चा राइट फ्रॉम 3 टू 6 इयर्स ऑफ एज भी बच्चे मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करते हैं, हम उन्हें करवाते हैं। वो सिर्फ एक फ़ोकस का टाइम है थोड़ा-सा कि बच्चे शांत होके बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके जैसा हम सेल्फ डिस्कवरी की बात कर रहे हैं वो करें। तो वहीं से ही हर चीज़ वहीं से जड़ों को हम रोपित प्रक्रिया करते हैं। तो मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं। हम छोटे-पन से कुछ शुरू कर सकते हैं दैट विल अफेक्ट द लेटर स्टेज। माइंडफुलनेस पुट इट लाइक दिस माइंडफुलनेस और साँस लेना, 2 चीज़ें आनी चाहिए। जो भी चीज़ करते हो माइंडफुलनेस और साँस लेने पे ध्यान चला जाएगा तो सब सही है, सही रास्ते पे जा रहे हैं। Maybe you can repeat your question, I just got wants to be famous और सबको सब पढ़ना है, सब करना है। तो आप अभी अभी तो इंस्टाग्राम का टाइम है या फिर फेसबुक का टाइम है कि जितने लाइक्स आएँगे, उतना मैं फेमस और अगर मैं फेमस हुई होंगी, तो फिर बच्चा वहाँ पे फँस जाता है। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? हाँ, I think generation today is under pressure than what we were. Actually, because they need to manage that public image, I believe lot more of the relationship or the social connect which he built is
based on the social media image of that person. But I believe मेरा एक ही जवाब है इस चीज को लेकर कि every day an individual need to spend time idle asking question to himself that it is important, but कहाँ तक important है? So वो जो सवाल का जवाब है, I think that answer should come from you. That my social media likes are important. If I'm zero, definitely it will put a question mark on me and there will be bullying around which I need to face, which I need to manage because I need to be in class, I need to live with them. But then, is there any end to it? Is there any number which proves that इतना number मैंने achieve कर लिया ना तो मैं hit हो गया? Is there any number? And you will find the answer is less. इसका कोई अंत नहीं, कोई और छोर नहीं. So I believe it's just about making your presence there. It is important. You cannot say that not be on social media मैं बिल्कुल disconnect हो जाऊँगा. I don't care about in life. I think वो महात्मा ही नहीं बन सकता. So we need to be involved. We need to practice certain things that others are doing because it is important. But I believe we need to understand where is the limit. If I am into showbiz, बहुत important है. If I hire people to take care of my likes, hits, follow. But if I'm a student, I think career के लिए important है because people look your LinkedIn profile, your other social media profile to assess what you are, what are your likes and interests and all those stuff. But it's not something that is a celebrity. तो अगर मैं बहुत ज़्यादा active होती हूँ, I'm giving my productive time because this time is something where I need to invest into something more important. So I believe that answer is different for every student, or every youngster who is in this stage. You need to just identify what is the right amount of time they need to spend. And the answer is where is the time? Everybody they ask invariably. मैम समय ही नहीं है, टाइम नहीं है. आई बिलीव दीज आर पार्ट ऑफ सिर्फ पढ़ना ही तो करना क्या है, समय गया. And I believe most of the time, all of us, including all of us, the youngsters and the elders and the older people, we are lost because the time has been sucked by your digital devices. Because you're managing information, you are replying, you are reading them, you are adding posts, reels. I think your mails, your LinkedIn. So you are having your business on 10 different platforms and monitoring them, getting answers, replies, again further responses to them is consuming your 90% of time. So are you really productive? Or are you really making the best use of talent you give with? No. So I believe you need to just find an answer to yourself. And that will only come if you are just sitting idle. दिन का कोई एक समय है जहाँ मैं सिर्फ खाली बैठी हूँ और मुझे बैठकर किसी से बातें नहीं करनी है, किसी कोई काम नहीं करना. मेडिटेशन साइंस है. So I started practicing to understand that whether it is a piece of it really makes me calm. But then you find a different answer to it because it's not easy. When you close your eyes to meditate, you find more loud or noise within you and a lot of thoughts creeping in. I found a different approach to meditate. So every student for that matter should do something which he loves to do beyond the social media. It can be, it's not your interest. जैसे मुझे book पढ़ना पसंद है, तो I spend time reading any book which is there. Anyone, if you love gymming, do that because that is meditation. Because you are completely soaked into that activity. You love gardening, do that because that is where you actually nurture yourself. So, right, med could be anything which you love doing. It can be your hobby, it can be your passion, it can be traveling, whatever. पर वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ही चीज़ है जो आपको आपके सारे सवालों का जवाब देगा. There are people who love shopping, but I think again it is an instant gratification, but there is no end to that happiness. And there will be a point of time, even after achieving the best numbers, you will be unhappy because you are lost. You're lost in you're chasing a horizon जो कभी हाथ नहीं खुलने वाला है because there will be some new numbers set for you and you would be just chasing. So you just have to find what is required for me. As a student, this number is fine. My presence is important.
But I need not be notching up to someone who is high on that. They may be happy that you're bullying me today, but tomorrow would be me. Because it's all about your talent and your skill. Where you reach your career. तो वो जवाब ही लाना होगा. That's all from me. Thank you so much. Thank you, ma'am. As we wrap up with the ideas that stand out, I have assorted my guests who highlighted everything. Ritu ma'am's idea of having roots but not forgetting to have your wings, and also knowing yourself. Parul ma'am's idea of trust, sensitivity, and mindfulness. And Upasana ma'am's idea of unwiring, going out, counting the stars, and doing what you love. So these aren't just small thoughts, these are like a compass and the foundation of a very long journey. So I conclude the session with the words of Leonard Cohen, a singer and a poet. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That is how the light gets. जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है, हर चीज में दरार होती ही है, फिर भी खामियां और दरारें ही हैं जो प्रकाश को हमारे जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देती है. So, lastly, I want to express my gratitude to Credent TV and to Sunil sir, Chorus sir, and Mrs. Jains of both law college, to the faculty, staff members, and students for inviting us and organizing this beautiful event. I want to thank my panelists for trusting me with their time and expertise. I want to thank St. Soul's Peachy College and my mentor, Professor Dr. Shubha Sharma ma'am. Thank you all for coming today. Have a good day. Yeah, yeah. You can go. Just remember saying impulsiveness को like ध्यान में रखो. You don't have to be impulsive, but try to control the impulsiveness, laziness जो हमें ध्यान में रखना है, और discipline. Discipline को बहुत ज़्यादा वैसे नहीं समझना चाहिए that discipline is something that you keep doing till you start enjoying it. तो उस level तक आओगे तब discipline. तीन चीजों का और ध्यान रखो कि काफी like impulsiveness जो हम कह रहे हैं ना इसको, if you become if you are aware of, you become mindful. दो चीजें हैं, mindful, aware हो जाएंगे. Thank you, ma'am, for sharing your views on psychology. That was a very knowledgeable session. I would like to conclude by saying on psychology, human behavior follows desire, behavior, and knowledge and emotion, which every student requires in their life. Now, I request our principal, Professor Gaurav Kataria, Padma Shri, uh, Iman Ram Bambu's farmer scientist, Dr. Mahendraji Madhu, and Sunil Narnaulia, Chief Editor, Credent TV, to honor our esteemed guest.